Hello students, welcome to English grammar class. Today we will start our chapter number 13, the tenses. Verb tenses चार कितने टाइप के टेंस होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें कौन कौन सी 4 टाइप्स आती हैं? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. दीज आर द 4 parts. It comes in every sentence. So now the above chart contains the variant tenses that a verb can be used to indicate the time when an action takes place. Simple tenses. So simple tenses हमारे कौन से थे? I drove to my office yesterday. Present, I drive to my office every day. Future, I shall drive to my office tomorrow. These are हमारा simple tense हो गया. The simple tenses make basic statements of fact about everyday activities, actions और happenings. जो हमारे simple tense होते हैं उसमें क्या होता है? एक statement होती है जो कि हमारी everyday की activities, actions और happenings जो हमारे साथ daily routines में होते हैं उनके बारे में उनको present करती है. Simple present tense क्या होता है? First person, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल और ऑल सब्जेक्ट्स प्लूरल. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई एंड वो. सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू. थर्ड पर्सन क्या होता है? दे. ये हमारे कौन क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई ईट, वी प्रे, यू ब्रिंग, दे स्लीप, बॉयज रन. थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही, शी, इट. ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, सैम. The simple present tense is not used for the present moment, but it also talks about an action that takes place regularly, including the present moment. जो हमारा के सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो जस्ट उसी टाइम के बारे में नहीं होता है, वो उसके थोड़ा टाइम के साथ चेंज भी होता है. उसकी पोजीशंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिफोर टेकिंग माई बाथ. दिस सेंटेंस इंडिकेट्स दैट आई ऑलवेज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिफोर टेकिंग बाथ. उसमें क्या लिखा है कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, बट कैसे? नहाने के बाद. With verbs like always, never, usually, generally, often, every day, once a month. For example, I never eat anything between meals. Generally, my friends come to my house in the evening. To express scientific facts, geographical facts or a permanent truths. Water boils at 100 degrees Celsius. This is a scientific. इसमें क्या है? 100 degree Celsius. The earth goes around the sun. ये क्या है? Goes around the sun क्या हमारा geographical fact है. India is a country of a great diversity. ये हमारा permanent truth है. To express natural quality of processes और professional activities. For example, a children love to play outdoor game. ये क्या है? Natural quality है, ये सभी चिल्ड्रंस में होती है. The greengrocer sells vegetable. This is a professional activity है. क्या कर रहा है वो? Vegetable sells करता है. The verb be is be a special verb. Its various forms are is, am, are, was, verb, will be and shall be. For example, I am very happy today. Jogesh was in fever last night. The various forms of be are used by Lexus in the continuous tense. The dog is walking. The children were playing. The plane will be leaving. When the various forms of be are used by as expected, the negative will be the dog is not working. The children were not playing in the garden. The plane will be not be leaving at midnight. Remember, not is placed between the appropriate form of be and the ing from the main verb. तो जो हमारा नॉट है वो कहाँ आता है? इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म. तो सेम वर, विल, ये भी सभी ऐसे ही प्लेस करते हैं. व्हेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी यूज्ड बाय लेक्चर्स एंड इंटरोगेटिव फॉर्म विल बी. जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब कहाँ आते हैं? बी प्लेस्ड कहाँ होता है? सब्जेक्ट के पहले. इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्किंग. वर सब्जेक्ट प्लस प्लेइंग. ये हमारे इंटरोगेटिव फॉर्म है. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैव आर यूज्ड बाय लेक्चर. परफेक्ट सेंटेंस में हैव कहाँ पे आता है? पहले उसका नाम आता है, फिर उसके बाद वर्ब परफेक्ट आता है हैवर, तो फिर लास्ट में उसका जो सेंटेंस होता है. वी हैड स्टडीड दिस पोएम अर्लियर. व्हेन द वेरियस फॉर्म्स हैव आर यूज्ड लेक्सन नेगेटिव में कैसा सेंटेंस विल बी सेम, बट हैज़ हैव हैड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी. नॉट कहाँ पे प्लेस होता है? हैव के पास्ट पार्टिसिपेट में. हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब. When the various forms of have are used earlier and interrogative forms will be has. Uniti left school
ईयर्स। तो जो हमारा हैज़, हैड, विल जो भी हम यूज़ करते हैं वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद उसका नेम आएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी। तो हमारा हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो डू or used while forming negatives and interrogatives sentences in the simple present and simple past tense. Affirmative sentence और negative sentence में क्या होता है? The horses gallops fast, the horse does not gallops fast. ये हमारा simple sentence है, इसको हमने negative में किया does not के साथ. Remember, while forming a negative using do, we use appropriate tense to do along with the original form of the main verb. For example, in the second sentence above, the main verb is gallops. When we form the negative, we write it as does not gallop. तो हमने इसके साथ एस को हटा दिया, तो हमने इसको सिंपल वर्ब में लिखना है जब इसको हमने नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है. सिमिलरली इन द थर्ड सेंटेंस अबव, द मेन वर्ब यूज्ड इन द पास्ट टेंस टॉक्ड. हाउएवर व्हेन वी मेक इट इनटू द नेगेटिव, वी राइट इट एज डू नॉट टॉक. तो हमने इसकी वर्ब की फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम द सेम आर एज फॉलोज. डज द हॉर्स गलॉप्स फास्ट? दे टॉक टू द प्रिंसिपल. When using do in the interrogative sentence, we put the appropriate form of do before the subject of the sentence and then the original form of the main verb. हमने क्या करना है, जब इसको do में चेंज करना है इंटेरोगेटिव में does, did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म. Speak out the sentences given below in the negative form and then in the interrogative form. Janet attends karate class every Saturday. तो हमने इसमें क्या करना है, does, do not के साथ इनको चेंज करना है. Janet does not attend, तो ऐसा हमने नहीं लगाना है कराटे क्लास एवरी डे. द डिलीवरी मैन डज नॉट डिलीवर्स द पार्सल एवरी डे. द वेजिटेबल वेंडर डज नॉट कम टू अवर हाउसिंग estate every evening. The children do not play in the park. My uncle does not read a lot of travel books. My sister does not eat with a spoon. His French class does not begin at 10 a.m. and end at 11 a.m. My mother does not go to the temple before we are awake. Lina does not usually write with her left hand. We do not usually say a prayer before school starts. तो हमने इसमें क्या किया, do and does not के साथ इनको चेंज कर दिया है. नेक्स्ट अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो उसमें क्या होता है, वो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे साथ अभी हो रहा होता है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो अ हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट. एक्सप्रेस जनरल truths, scientific facts and geographical facts. In exclamatory sentences begin with here and there to express what is actually takes place in the present, to express a fact that is true at the time of speaking. For example, there is no breeze. With words like generally, usually, always, once a month, never, every day, normally, often. To show future event that is already arranged or is part of a fixed timetable or fixed program. जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है, कस्टम होता है, रूटीन की जो हमारी वर्क होता है उसको शो करता है. ये जनरल ट्रूथ भी हो सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट और जियोग्राफिकल फैक्ट में सेम ही रहते हैं. तो रीड आउट द सेंटेंसेस गिवन द बिलो, चेंजिंग द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट. एडी गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. इसको हमने इसके साथ चेंज करना है जो सेंटेंसेस हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं. मिली एंड जॉस्प, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया. मिली एंड जॉब्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. हियर सेकेंड वन इज माई चिल्ड्रन ट्रैवल टू स्कूल बाई बस. अमित एंड रवि रीड टू अ लॉट ऑफ ट्रैवल बुक्स. इंश्योरेंस एंड पेंशन आ वेल्थ इन गोल्ड एज. तो हमारा इसने हमें इज था और हमने इसको चेंज कर दिया आर के साथ क्योंकि ये बोथ हैं. Mercury and salt water boil at 100 degrees Celsius. Natural satellites orbit the Earth. India and Pakistan are developing nations. My sibling is come to my house in the evenings. Samiksha normally waters the garden every day. The hockey cup and the football cup begin tomorrow. Amrita moves to her lobby every day. The games start at 9 o'clock. His father takes rest in the evening. This team pay their tax regularly. So हमने क्या किया, इन सेंटेंसेस को स्टार्टिंग में यूज़ करके सेंटेंस को चेंज कर दिया. रीड
आउट दी सेंटेंसेस गिवन बिलो इन देयर नेगेटिव फॉर्म। इस जो हमारे ये सेंटेंस है इसको हमने नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। राम डज नॉट ड्रिंक टी इन evening hours. Soap does not eat boiled potatoes with cheese. They do not watch English teleseries regularly. We do not catch the tram every evening. It does not rain every morning in the rainy season. They do not drive to church in every spring. Water does not freeze at 0 degree. The planets do not revolve around the moon. His aunt is not from visions. तो इस यहाँ पे is यूज़ किया तो हम यहाँ पे do और does not यूज़ नहीं करेंगे. Do not open the pack after an hour. His father does not arrive today. Our vacation does not start on the May 1st. Amrit will not meet you before the leaves. We will not give it to him when he arrives at the airport. Complete these sentences with the simple present form of the verbs given in the brackets. जो हमारी ब्रैकेट में फॉर्म्स दी गई हैं वर्ब की उसके साथ हमको सेंटेंस को चेंज करना है. The bus arrives at 3 this afternoon. Ankit watches television most evenings. The next term begins on 1st November. Manish never forgets to do his homework. Bad driving causes may accident. Fill in the blanks with appropriate simple present tense form of the verb given in brackets. हमें इसमें simple present में change करना है जो कि bracket में दिया गया है. When does the taxi leave? Please inform me as soon as Surya arrives. Savita is a doctor. राम ऑलवेज इन्फॉर्म्स व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम हिज शिफ्ट. तो इसमें हमने कम के साथ एस लगा दिया तो हमने इसको यूज़ करना है सिंपल में. लेट्स हैव पेशेंस टिल मारिया फिनिशेस हिज असाइनमेंट. इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. Unless the event starts now, it can be completed on time. The consignment arrives at 4:25 in the morning. The creative writing workshop begins on Wednesday. राम एंड श्याम आर अवर रिलेटिव्स. तो हमने इन सब के साथ एस यूज़ कर दिया और यहाँ पे बी था उसके साथ इज़ एम आर जो भी हमें चेंज करना है उसमें एज अ सेंटेंस हमने चेंज कर दिया. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिल इन ब्लैंक्स. तो इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. तो हिज पैकेज अराइव्स एट 12:10. अमृत स्टार्ट हिज न्यू प्रोजेक्ट सून. आई वॉच teleseries every day. I deny the charges leveled against me. The planet Mars rotates around its axis. What do Wallace eat? All adults like extra sugar in their tea. I like this art gallery a great deal. My father works in the newspaper industry. Frina will fight anybody who touches her belongings. So these are our correct options. Hope you guys understand all about the tenses and simple present tenses. Thank you. Have a good day.